नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। Myself, JVN Dr. Astha Sikarwar, Assistant Professor, Department of Organ of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's topic is basic concept of cure. Cure can be defined as permanent disappearance of all the existing symptoms of the patients. Cure is a process by which Hahnemann meant to restore the sick to health with the total annihilation of the disease by fixed principle. Cure refers to the patient not to some symptoms of his disease, nor to what may be called one of his disease, means complete restoration of health. Cure is not accomplished by the surgical removal nor by any local means of the external secondary pathological end products of the disease for the morbid functioning which produce those effects often remains unchanged after such removal. Relation with disease. Disease is manifested perceptibly by its sign and symptoms. Cure is manifested by the removal of the symptoms. Signs and symptoms डिसीज साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है, फिर उन साइन ऑफ सिम्टम्स का रिमूवल होगा टू द होल एक्सटेंट, होम्योपैथी में टू द होल एक्सटेंट, देन इट मीन्स क्योर। क्योर जो होता है वो होम्योपैथी में परमानेंट होता है, टेम्परेरी नहीं होता, ना कि पैलिएशन और सप्रेशन होता है। The removal of all the symptoms of the case is equivalent to cure, but if the symptoms disappear and the patient is not restored to health and strength, it means either some of the most important symptoms of the case have been overlooked or that the case has passed beyond the curable stage. Law of direction of cure. होम्योपैथिक जो क्योर होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, उसको कहते हैं हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर or direction of cure. Cure takes place from above downward, within outward, from a more important organ to a less important organ. Symptoms disappear in the reverse order of their appearance. होम्योपैथी में हमारा जो क्योर होता है वो हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर होता है, जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म नंबर 2 में बताया है। उसमें क्या होता है, जो कि हमारा आइडल क्योर है वो कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ द डिसीज, शॉर्टेस्ट, रिलायबल, हार्मलेस, एंड क्योर शुड बी ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। अगर हमारा क्योर ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो करता है तभी वो हमारा एक आइडल क्योर है। What are the qualifications required by a homeopathic physician to cure a patient? First, the physician has to ascertain what is necessary to in order to cure the disease. Knowledge of disease indication, knowledge of medicinal powers, knowledge of choice of remedy, the medicine indicated, exact mode of preparation, quantity of it required, that is proper dose, proper period for repeating the dose, obstacle to recovery in each case. ये सारी क्वालिफिकेशन डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 3 में बताई हैं, जो कि रिक्वायर्ड होती हैं एक परफेक्ट क्योर करने के लिए, क्वालिफिकेशंस ऑफ अ फिजिशियन। जो क्योर है वो क्या फॉलो किस बेसिस पे होना चाहिए। जो होम्योपैथी में क्योर होता है वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे डिपेंड होता है, जो कि एफोरिज्म नंबर 26 में बताया है। A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter, whilst differing in kind, is very similar to the former in its manifestation. This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in comment box. I will resolve it.
Thank you.